Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another video. It's almost 4:30 in the morning and I'm creating this video because US markets में कल काफ़ी उथल पुथल मची है. So we'll try to understand what we can expect in our market in the morning today जब market खुलेगा on Wednesday on 9:15 a.m. and क्या हम expect कर सकते हैं and basically what happened there and why the market overreacted so badly to whatever was the cause. तो यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे आज शाम को एंड द नंबर्स वर वर्स ऑफ देन द एक्सपेक्टेशन ऑल्दो द इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड मंथ ऑन मंथ but the market was expecting the drop to be significant but it was significantly above the expectations of the market, and that's the reason that you saw Nasdaq, Dow and S&P all three tank. And basically this is not a very positive sign because post the inflation numbers the developments in the bond market are a bit concerning. We'll talk about that. So let's begin. तो चालू करेंगे निफ्टी 50 के साथ. आई थिंक देयर इज़ नो स्टॉपिंग ऑन द निफ्टी 50 इंडेक्स. आज 18,000 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी मार्केट की एंड सर्टनली रोज़ गैप अप होता है एंड द गैप अप सस्टेन्स क्वाइट वेल. निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स हैव बीन अ कंसर्न. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग सिंस द लास्ट फ्यू वीक्स एंड डेज और इवन मंथ्स आई शुड से दैट वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं इतने. राइट, यू कैन सी दैट ये जो लाइन है ब्लू वाली दैट इज़ अ 20-day मूविंग एवरेज ऑफ द वॉल्यूम्स and the volumes definitely are not coming up. Bank Nifty की बात करें, so Bank Nifty again has been going pretty I should say fiercely upwards, and that's what we have been seeing. RSI is about 71 and there is a clear and a very big divergence, shall I say. So you can see कि यहाँ पे Bank Nifty was around 39,600 and the RSI was 83 and यहाँ पे it is at 4,800 or I shall say close to 4,900 and the RSI is 71. So yes, there is a big divergence, but anyways, let's see that how longer can it sustain here. What's interesting to observe is the US markets today and what happened there. So we'll try to understand that, and basically as I told you that the US inflation numbers were not really good and you can see the effect of that. So these are not futures, these are the spot prices. I told you since it's almost 4:30, so the futures have started trading on a new day, and we'll see what is the current situation in the futures. But this is what you can see कि यहाँ पे अच्छा खासा एक ब्लड बात आया हुआ है, and this is really a cause of concern, I shall say. You can see तीनों indices गिरे हैं. The VIX has risen up by almost 15%, 14% I shall say. एंड यहाँ पे देख सकते हो कि नाजडाक 5% से ज़्यादा गिरा है. राइट, S&P हैज़ फॉलन बाय मोर देन 4% एंड डाउ हैज़ ऑल्सो फॉलन रफली बाय 4%. एंड आई ऑलवेज टेल कि S&P का ऐसे गिरना डेमोन्स्ट्रेट्स कि देर इज़ अ वीकनेस अक्रॉस द मार्केट, बिकॉज अगर सिर्फ नाजडाक गिरा होता सो वन माइट हैव सेड कि ओनली टेक स्टॉक्स हैव वीकनेस इन US. But if the S&P is also falling and the Dow is also falling to a considerable amount, then इसका मतलब है कि प्रॉब्लम थी US में, and certainly the market did not react positively. And Fed की मीटिंग भी है अभी सितंबर में. Dates I need to confirm, but yes, there is a FOMC meeting in the month of September. तो वहाँ पे एक एग्रेसिव रेट हाइक हो सकता है. दैट्स व्हाट द मार्केट इज़ एंटिसिपेटिंग. एंड कल के जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे दैट डेफिनेटली इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज मीटिंग के जस्ट पहले इन्फ्लेशन का ख़राब आना is not a very positive sign, and Fed is committed to reduce inflation, and uske liye whatever they need to do they will do. That's what Jay Powell said in the last meeting in Jackson Hole. एक बार इंडेक्सेस में देखें तो डॉलर इंडेक्स यू कैन सी कि वापस से राइज अप हुआ है. 2-3 दिन में ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, बट अगेन इट हैज़ रोजन अप एंड 109.5 के ऊपर की क्लोजिंग उसने दी है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. क्रिप्टो में एक बहुत ही अच्छा फॉल आया था पोस्ट द मीटिंग, post the inflation numbers, and definitely along with the markets in the US, crypto also tanked quite hardly, and if I'm not wrong, so 10 से 15% correct हुआ है Bitcoin and Ethereum from their highs of yesterday. So again this is not really good. बॉन्ड मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थे. देख सकते हो कि 3 मंथ्स की जो यील्ड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3.25. इसका एकदम रॉ शब्दों में ये मतलब है कि नेक्स्ट 3 months में द मार्केट इज़ एंटिसिपेटिंग or is rather forecasting the interest rates to be close to 3.25, which if I am not wrong is somewhere close to 2.25 as of now. So definitely 1% का rate hike the market is anticipating in the next 3 months based on current situation. Of course if it rises further then we can say that इससे भी ज़्यादा hike हो सकता है, but anyways we'll have to see that. और बात करें अगर इन्वर्जन की तो यील्ड का इन्वर्जन और ज़्यादा वर्सन ऑफ हुआ है यहाँ पे.
यू कैन सी कि 10 ईयर एंड 2 ईयर के बीच का जो डिफरेंस है दैट हैज़ गॉन टू ऑलमोस्ट 0.33 इन द नेगेटिव ऑफ कोर्स. एंड वी कैन सी कि यहाँ पे 10 ईयर और 3 मंथ्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ समवेयर क्लोज टू फ्लैट. तो इट्स गुड दैट इट हैज़ नॉट इन्वर्टेड, बिकॉज ये इन्वर्ट हो जाना इज़ लाइक अ रियली बैड साइन. Do you understand that you are getting, let's say, more interest on a 3 months bond than a 10 years bond? That is like a disastrous situation to be in. And 10 year and 6 months देखेंगे तो अगेन 6 months की yield में भी काफ़ी अच्छा spike आया. If I'm not wrong, that is somewhere close to 3.7 as of now, and that is not at all good, because that's a clear sign कि यहाँ पे problem होगी. तो एक बार देख ही लेते हैं कि 6 months का जो yield है वो भी कितना है, and 6 months में what the market is anticipating कि क्या होगा basically. So we'll see that. But that being said, I think it was very much clear in the Jackson Hole meeting by Jay Powell that they will do whatever it takes to bring the inflation down. And I know a lot of people think that the economies have decoupled, specifically India and the world economies have decoupled. But it would be a foolish statement to say that whatever happens in the world, and if a recession in actual comes in the US, it won't have an effect on India. So 6 months ka yield you can see is somewhere close to 3.8 now. Okay, that has risen like exponentially, and this simply means that the market is anticipating an interest rates to be close to 4% or 3.8% in the next 6 months, which is really dangerous. So that's what we can see in the bond market. अब एक बार डेटा देखेंगे and we'll try to wrap this up. तो कैश मार्केट में आज फिर से बाइंग हुई है 1956 करोड़ फ्रॉम द FI, एंड DII ने बेचा है ऑलमोस्ट 1268 करोड़ का. व्हाट्स इंटरेस्टिंग एंड व्हाट आई नीड टू शो यू इज द डेरिवेटिव्स डेटा. Derivatives data is a little weird today because you will see clearly कि FI भी trap होते हैं, and that's what we'll see in the data. But let's start off with the net long position of the FI in index futures. You can see अच्छी खासी short covering आज देखी गई है. आज the market sustained above 18K, and almost 25,000 contracts of shorts they have covered in the index futures, which is massive. And long build up भी इन्होंने किया था decent. I should say 6,400 lots of some long build up was there in the index futures. But definitely this position they have exited in loss, that is for sure, because ये जो shorts हैं इन्होंने, if I'm not wrong, somewhere close to 17,500 से 17,700 के जोन में बनाने चालू किए थे when the market was consolidating a few days back. So definitely they have exited the shorts in loss as the market gave a breakout of above 18K. But certainly looking at the things, and अगर currently हम stock futures देखते हैं globally, so there's not a lot of positivity, and SGX Nifty has closed somewhere close to 17,725. So even if you open around 17,800, so that would be a problem. And index futures, so they are still like monthly positions, but जो options में आज activity हुई है that is even troublesome. तो स्टॉक फ्यूचर्स में दे हैव कंटिन्यूड टू मेक शॉर्ट्स. यू सेल से कि बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स है, एंड लॉन्ग्स यहाँ से भी निकले हैं. सो द नेगेटिविटी कंटिन्यूज इन स्टॉक फ्यूचर्स. द नंबर इज समवेयर क्लोज टू 52%, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड नंबर. बट यहाँ पे भी द ओवरऑल नंबर इज़ एट 35%, एंड ऑल्दो दिस शॉर्ट्स बीइंग एग्जिटेड वाज अ पॉजिटिव थिंग. बट अगेन ये कल कितना चेंज होगा, एंड ओवरऑल ये नंबर कैसे शेप अप होगा बेसिस कल का जहाँ पे भी ओपनिंग होगी, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. एंड इसमें से कितने शॉर्ट्स वापस आते हैं, एंड इसमें से लॉन्ग्स अनवाइंड होते हैं नहीं, विद द मार्केट रिकवर्स और व्हाट हैपन्स विल सी मॉर्निंग में. बट दैट्स व्हाट वी कैन सी राइट नाउ कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. और इंडेक्स ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सी कि सब जगह से नंबर निकला है, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ ट्रबल, राइट. एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि FI भी ट्रैप होता है. यू कैन सी कि ऑलमोस्ट कॉल लॉन्ग से इन्होंने नंबर निकाला है, पुट लॉन्ग से दे हैव एग्जिटेड द नंबर, कॉल शॉर्ट से भी इन्होंने नंबर निकाला है. दी ओनली थिंग विच दे हैव डन इज नेकेड पुट राइटिंग टुडे, एंड आई एम श्योर कि लॉट ऑफ दिस माइट बी weekly, or maybe next to next week, or maybe even September monthly. But this is going to give them a lot of pain, because if the market really opens 200 to 250 points gap down, or even more than 300 points gap down, that's what SGX Nifty has been showing. Again ये देखना पड़ेगा कि मार्केट खुलती कहाँ है. बट यू कैन इमेजिन कि अच्छी खासी क्वांटिटी में दे हैव डन नेकेड पुट राइटिंग, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर दीज पीपल. सो सर्टनली अब अगर मार्केट सही में इतना नीचे खुलता है, सो दीज गाइज माइट लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ द पुट राइटिंग दैट दे हैव डन, and because of that they might have to create contra positions, in a lot of aggressiveness to sort of compensate for this loss. We have seen them do this time to time, and this is how they basically deal with the loss. But certainly it's Wednesday today, and the gamma effect of the options is at peak. अब जैसे नहीं पता gamma क्या है, they can study more about it. I do have a dedicated video on the option Greeks.
but gamma is certainly going to cause a lot of trouble and the premiums are going to shoot up. And not only that, if there is panic in the market, the VIX will also rise and that will give further pain. So it would be very interesting to watch where the market opens and how the FII deal with this particular position. But certainly it's not very good and things are looking very bad. And let's see कि pro का क्या number था आज. अगर pro थोड़ा सा साथ हो गया FII के तो maybe these two can manage the market and the market can take some recovery from where it opens. But अभी देख के तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है. एंड प्रो का भी सिमिलर सिचुएशन है. यू कैन सी कि कॉल लॉन्ग्स, पुट लॉन्ग्स, कॉल शॉर्ट्स सब जगह से नंबर निकले हैं. दे हैव ऑल्सो डन नेकेड पुट राइटिंग. सो सर्टनली रिटेल ने जो आज पोजीशंस बनाई है दैट्स गोना फेवर देम अ लॉट. एंड यूएस में जो भी रिएक्शन हुआ दैट इज गोइंग टू फेवर द रिटेल पार्टिसिपेंट्स क्वाइट हैवीली, बिकॉज यू कैन सी कि अच्छे खासे नेकेड पुट लॉन्ग्स यहाँ पर रिटेल लेके गया है. सो सर्टनली दिस इज़ वॉट वी हैव सीन. एंड येस देयर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल कि FII भी ट्रैप होता है मार्केट में. नथिंग न्यू इन दैट. So let's see what all we can do and how does the market react tomorrow. So close करते हैं इसी के साथ ये वीडियो. Almost 4:30 बज रहा है सुबह का. So definitely do appreciate by liking this particular video. And जाते आते please like करके जाना. And if you have any other thoughts, let me know in the comments. And if you are coming here for the first time, subscribe to this channel for more such content. Thank you so much for watching the video till the end. Have a good day. Take care and bye bye.